Bryophytes are considered to be the simplest multicellular land plants. They are called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on waters or sexual reproduction. There are about 25,000 species and all of them are mainly confined to the damp, moist and shady places, commonly found growing in moist and shady areas in the hills, as they are not well adapted to life on land. They form a green carpet on damp soil, rocks, walls and barks of trees. They play an important role in plant succession on bare rock butta soil. They flourish during the rainy season. Important features: the plant body is more differentiated than that of algae. It is thallus-like. The plant body could be prostrate, horizontally placed, or erect, and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They are very small plants and do not have true roots, stem or leaves. They may possess root-like, stem-like or leaf-like structures. They have thin root-like structures called rhizoids which anchor them to the ground. The plant body may be flat as in liverworts, resembling the lobes of a liver, or tiny leafy structures on stalks, as in mosses. Moss plant is just about an inch long. They have no specialized tissues like xylem and phloem for conduction of water and other substance from one knot to another. The materials like water and food are transported from cell to cell. The main plant body of the bryophyte is haploid. It produces gametes and is called a gametophyte. The green structure that we see is the gametophyte. It is the dominant phase of life cycle. The sporophyte is attached and dependent on the gametophyte. Sporophyte produces spores. Water is extremely important for fertilization. इनमें मॉसेस तथा लिवरवॉर्ट्स आते हैं, जो प्राय हिल्स के मॉइस्ट शेडेड एरिया में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फिबियंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सॉल में रह सकते हैं, लेकिन इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये डैम्प, ह्यूमिड तथा शेडेड स्थानों पर उगते हैं। ये बेयर रॉक या सॉइल पर प्लांट सक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका शरीर एल्गी से अधिक डिफरेंशिएटेड होता है। ये थैलस की तरह होते हैं और इरेक्ट या प्रोस्ट्रेट होते हैं। ये सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम तथा लीव्स नहीं होती है। इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक तथा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लांट की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है। ये गैमीट्स उत्पन्न करती है, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। Reproduction. The bryophytes show alternation of generation between the gametophytic and sporophytic generation, with gametophytic being the dominant phase. The plant body is gametophyte haploid. It produces gametes. The sex organs in bryophytes are multicellular. The gametophyte bears antheridia, male sex organs, and archegonia, female sex organs. Archegonia are flask-shaped structures. Antheridia produce biflagellate antherozoids, which are released in water where they come in contact with archegonia containing a single egg. An antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygote produces a multicellular body called a sporophyte. Sporophyte is not free-living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division or meiosis to produce haploid spores. Haploid spores germinate to produce gametophyte. ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेल्युलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं, जो बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स उत्पन्न करता है।
फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। यह फ्लास्क शेप्ड संरचना होती है तथा सिंगल एग उत्पन्न करती है। एंथेरोजॉइड्स पानी में ननकलते हैं, जहां पर ये आर्किगोनियम के संपर्क में आते हैं। एक एंथेरोजॉइड एक एग के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट्स में मियोसिस तुरंत नहीं होती है। जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है, जो मल्टीसेल्यूलर बॉडी है। इनमें स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होती है, बल्कि ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ी होती है तथा इससे नरिशमेंट प्राप्त करती है। स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में मियोसिस होती है तथा ये हैप्लॉइड स्पोर्स उत्पन्न करती है। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। Economic importance. Mosses bind soil and hence prevent erosion. The moss sphagnum is used by gardeners to keep cut plant parts moist during transportation and propagation, as it has been observed that sphagnum can absorb the water 18 times more than its weight. It is used as a packing material for transshipment of living material. Moss is used in the houses as a moss stick to absorb and hold water for the plant. Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. इनकी economic importance बहुत कम होती है। कुछ mosses शाकाहारी mammals, birds तथा दूसरे animals को भोजन प्रदान करते हैं। स्फैग्नम की कुछ स्पीशीज पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग फ्यूल के रूप में होता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए यह लिविंग मटेरियल की पैकिंग में तथा ट्रांसशिपमेंट में यूज होते हैं। मॉसेस तथा लाइचन्स पहले ऑर्गेनिज्म हैं जो रॉक्स पर ग्रो करते हैं, इसलिए यह इकोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये रॉक्स को डिकम्पोज कर सबस्ट्रेट को हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल बनाते हैं। मॉसेस मिट्टी पर डेंस मैट्स बनाते हैं, इसलिए रेनफॉल अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार ये सॉइल एरोशन को रोकते हैं। ब्रायोफाइट्स को लिवरवोर्ट्स तथा मॉसेस में बांटा गया है। Liverworts. They grow usually in moist, shady habitats. The plant body is thalloid. The thallus is dorsiventrally flattened and closely attached to the substrate. Some members of the group may have tiny leaf-like appendages into rows on the stem-like structure. ये साधारणतया moist तथा shady habitats, जैसे नदी का किनारा, माशी ग्राउंड, बार्क ऑफ ट्रीज तथा लकड़ी के अंदर मिलते हैं। इनकी प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, जैसे माचंटिया। थैलस डोर्सीवेंट्रल तथा सबस्ट्रेट से क्लोजली अप्रेस्ड चिपके होता है। इनके लीफी मेंबर्स ये लीफ जैसे अपेंडेजेस लगे होते हैं, जो दो रो ये स्टेम जैसे स्ट्रक्चर से लगे होते हैं। Asexual reproduction takes place by fragmentation of the thalli or formation of specialized structures called gemmae. Gemmae are green, multicellular, asexual buds that develop in small receptacles called gemma caps present on the thalli. The gemmae get detached from the parent body and germinate to form a new individual. ये तल्ली के फ्रैगमेंटेशन द्वारा या जेम्मे के निर्माण द्वारा होता है। जेम्मे ग्रीन मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बड्स होते हैं, जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं। जेम्मे पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है तथा जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। Sexual reproduction occurs by the formation of male and female organs which are produced either on the same or on different thalli. The organs produce male and female gametes, and fusion of gametes leads to the formation of zygote. Zygote develops into a sporophyte. The sporophyte is differentiated into a foot, seta, and capsule.
Spores are formed by meiosis in the capsule. The spores germinate to form free-living gametophyte. Example, Richia, Marchantia. मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेम या डिफरेंट तल्ली पर उत्पन्न होते हैं। स्पोरोफाइट फुट, सेत और कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। Mosses. Like all bryophytes, the predominant stage of life cycle in mosses is the gametophyte, which consists of two stages. First stage is the protonema stage, which develops directly from the spore. It is a creeping, green, branched and frequently a filamentous stage. Second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. It consists of upright, slender axis-bearing spirally arranged leaves. It is attached to the soil through multicellular, branched rhizoids. This stage bears sex organs. The sex organs are antheridia and archegonia that are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote develops into the sporophyte, as explained earlier, consisting of foot, seth and capsule. Spores are formed in the capsule after meiosis. Capsule opens to release spores, which on germination give rise to gametophyte. मॉस की लाइफ साइकिल में प्रमुख अवस्था गैमेटोफाइट होती है। इसमें दो स्टेज होती है। प्रोटोनिमा स्टेज, यह फर्स्ट स्टेज है जो डायरेक्टली स्पोर्स से उत्पन्न होती है। यह क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और प्रायः फाइलमेंटस स्टेज है। लीफी स्टेज, यह सेकेंड स्टेज है जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड के रूप में डेवलप होती है। इनमें अपराइट, स्लेंडर एक्सिस होता है जिस पर पत्तियां स्पाइरली लगी होती है। ये सॉल से राइजोइड्स द्वारा जड़ुए रहते हैं। राइजोइड्स मल्टीसेल्युलर और ब्रांच्ड होते हैं। Vegetative reproduction is by fragmentation and budding of the secondary protonema. Example, Funaria, Polytrichum, Sphagnum, etc. The gametophyte bears archegonia, female organs, and antheridia, male organs, at the tip of the leafy stems. Depending on the species of the moss, they could be on the different branches of the same plant or on different plants. The antheridium opens on maturity and releases flagellated male gametes which swim in a film of water. It could be rain or even a film of dew. A sperm passes through the neck of archegonium and fertilizes the egg cell. The fertilized egg is called zygote. It is the beginning of sporophytic stage. Sporophytic phase, it is an asexual phase of the life cycle. The zygote divides mitotically and forms a sporophyte. The sporophyte has a stalk and a capsule at its tip. It remains attached to the gametophyte so as to obtain nourishment. In the capsule, the diploid cells undergo meiotic division and form haploid single-cell spores. As the capsule dries, the hood falls off, the capsule opens and the spores escape. These spores grow into a new gametophyte on reaching a suitable moist surface. Each spore produces thread-like structures called protonema. Vegetative reproduction ये secondary protonema में budding और fragmentation द्वारा होता है। Sexual reproduction leafy shoots के apex पर sex organs, antheridia व archegonia produce होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है जिसमें फुट, सेत व कैप्सूल होते हैं। मॉसेस का स्पोरोफाइट लिवरवॉर्ट्स से अधिक इलैबोरेट होता है। कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं और स्पोर मियोसिस के बाद बनते हैं। मॉसेस में स्पोर डिस्पर्सल के लिए इलैबोरेट मैकेनिज्म होती है।